Hello, everyone, and very good afternoon once again, guys. So, welcome back, everybody, and have a great afternoon. So, let's see who are alive with us now. Avni Singhal is there, Preeti Singh, Anjali, Anuj Kumar, Anushka, Priyanka, Nancy, Abhishika. Great. So, welcome, everybody. And in today's class, we are beginning with a new topic that is measures of dispersion. Yes. So, we are beginning with measures of dispersion. तो डिस्पर्शन का क्या मतलब होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म डिस्पर्शन? डिस्पर्शन सिंपली मींस डेविएशन और द फ्लक्चुएशन अमंग द डेटा अमंग द गिवन ऑब्जर्वेशंस। जो भी डेटा हमारे पास अवेलेबल है उसमें कितना वेरिएशन है, कितना फ्लक्चुएशन है, कितना गैप है, दैट इज बेसिकली नोन एज डिस्पर्शन, और यू कैन से फ्लक्चुएशन. दिस इज डिस्पर्शन. Now, dispersion is divided into basically two parts. First is known as absolute measure of dispersion, and second one is known as relative measure of dispersion. Absolute and relative measure of dispersion. Now, what is the difference between these two? दोनों में क्या difference है? Okay, वो हम समझेंगे. So some more people are live now. Mohammad Farid, Sejal Mishra, Brajesh, Renuka, Kinjal, Muskan, Dheeraj. Great. So now, Nagimi is asking, can this is my first class. Can I continue from today? Yes, you can continue. Do not worry with that. Some of the points are connected with the central tendency chapter, but yes, you can join from here. And if you have missed the central tendency chapter, then you can go through recording of central tendency after this session. Okay. So dispersion is divided into two parts. First is absolute measure and second is known as relative measure. Now, what is the difference between these two? दोनों में क्या difference है? Absolute measure, it shows amount of variation. It shows amount of variation. Whereas relative measure shows degree of variation. It shows degree of variation. तो एब्सोल्यूट क्या बताता है? अमाउंट ऑफ वेरिएशन, वेयर एज रिलेटिव मेजर शोज डिग्री ऑफ वेरिएशन. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ अ सिंपल एग्जांपल. लेट्स से एक पर्सन की सैलरी इंक्रीज हो गई फ्रॉम 20,000 टू 25,000. पहले उसका सैलरी कितना था? 20,000. नाउ इट इंक्रीज टू 25,000. तो एब्सोल्यूट मेजर क्या बताएगा? चेंज इन सैलरी इज ₹5,000 कि उस पर्सन की सैलरी इंक्रीज हो गई है कितने से? 5,000 से. ये हमें कौन बता रहा है? एब्सोल्यूट मेजर बता रहा है. नाउ डिग्री ऑफ वेरिएशन का मतलब क्या है? इट इज इन टर्म्स ऑफ रेशियो और इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज. ये रेशियो या परसेंटेज की टर्म्स में होगा. तो डिग्री ऑफ वेरिएशन में हमें क्या पता चलेगा कि कितना परसेंटेज से सैलरी बढ़ी है. तो इंक्रीमेंट इज 5,000 डिवाइडेड बाय बेसिक सैलरी अर्लियर वाज 20,000 मल्टीप्लाई बाय 100. तो इट शोज हाउ मच? 25%. The salary is increased by 25%. तो दोनों के लिए रॉ इंफॉर्मेशन बिल्कुल सेम थी, लेकिन जो फाइनल कंक्लूजन है वो डिफरेंट टर्म्स में है. एब्सोल्यूट मेजर ने बताया सैलरी 5,000 से बड़ी है, जबकि रिलेटिव मेजर ने बताया सैलरी 25% से बड़ी है. सो जब हम दोनों को देखते हैं तो दोनों रिजल्ट, बोथ रिजल्ट्स आर रिक्वायर्ड नॉर्मली, बट दोनों में से ज्यादा बेटर हमारे लिए कौन सा रहता है? दैट इज रिलेटिव मेजर. बिकॉज अगर हम कई बार कहते हैं इंक्रीमेंट 5,000 से हुआ है, बट ये इंक्रीमेंट 5,000 का किस पे हुआ है वो हमें नहीं पता. उसका बेस कितना था? 20,000 था, 50,000 था, या 1 लाख था. अगर सैलरी पहले से ज्यादा थी तो हो सकता है सिर्फ 5% चेंज आया है उसकी सैलरी में, तो पर्सन खुश नहीं होगा. लेकिन परसेंटेज से एक क्लैरिटी आ जाती है
कि पहले के कंपैरिजन में कितना परसेंटेज हमारा राइज हुआ है। तो परसेंटेज गिव मोर क्लैरिटी। तो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। ओके, नाउ सेकंड वन। सेकंड पॉइंट क्या कहता है कि जब भी हम एब्सोल्यूट मेजर करते हैं, एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन को यूज करते हैं, तो सम काइंड ऑफ यूनिट्स, some kind of units are used, whether it is rupees, kilogram, liter, meter, anything. Some kind of units are required. Whereas in relative measure, there is no use. Okay, I think there was some disturbance in between. So let's go through once again. So we were talking about absolute and relative measure. The absolute measure क्या show करता है? It shows the amount of variation, whereas relative measure shows degree of variation. एब्सोल्यूट मेजर में यूनिट हम कुछ भी यूज हो सकता है। इट कैन बी रुपीज, किलोग्राम, मीटर, सेंटीमीटर, एनी काइंड ऑफ यूनिट्स आर यूज। वेयर एज इन केस ऑफ रिलेटिव मेजर इट इज यूनिट फ्री, इसके पीछे कोई यूनिट नहीं लगता है। सो एब्सोल्यूट मेजर इज इजी टू कैलकुलेट, whereas relative measure is comparatively difficult but not much difficult. It is comparatively difficult. So in case of absolute measure, what we are going to study, we are going to study the four main points, that is range, mean deviation, quartile deviation, and standard deviation. These four deviations are studied under absolute measure. तो absolute measure में ये सारे चार points हम discuss करेंगे. Whereas in case of relative measure, we will be discussing about the coefficients of all of them. So coefficient of range, then coefficient of mean deviation, coefficient of variation, and coefficient of quartile deviation. So these four are the relative measure. Then K. Sanaga is asking, is percentage a unit? No. Percentage में आप express करते हैं, but it is not a unit. Percentage आपका unit नहीं कहलाता. Unit का मतलब होता है kilogram, rupees, meter, centimeter. All these are units. Okay. Now, dispersion, the second important characteristics of a distribution is given by dispersion. Now, ये second important है. The first important कौन है? Central tendency. To measure of central tendency is always given the first importance in decision making. जब भी हमें कोई decision लेना है किसी चीज के लिए, तो आप ऑलवेज उसका एवरेज देखते हैं, उसकी पास्ट परफॉर्मेंस को चेक करते हैं. तो दैट इज विद द हेल्प ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. So, for example, if you are making some selections in cricket team or in IPL, then उस केस में क्या देखा जाता है कि उस प्लेयर का पास परफॉर्मेंस कैसा है, उसकी एवरेज परफॉर्मेंस कैसी है, हाउ मच एवरेज स्कोर अ बैट्समैन हैज मेड और हाउ मच एवरेज विकेट्स आर टेकन बाय दैट बॉलर. तो उसका एवरेज स्कोर हम देखते हैं. दैट मीन्स सेंट्रल टेंडेंसी इज ऑन द फर्स्ट प्रायोरिटी. ओके. उसके बाद नेक्स्ट हम क्या चेक करते हैं? डिस्पर्शन. तो डिस्पर्शन का मतलब क्या हो गया कि हम उसमें चेक करते हैं कि कितना फ्लक्चुएशन है, कितना वेरिएशन है. तो फ्लक्चुएशन जितना कम होगा उतना बेटर है, वेरिएशन जितना कम होगा उतना बेटर है. तो परफॉर्मेंस कैसी होनी चाहिए? ऑलवेज कंसिस्टेंट. परफॉर्मेंस कैसी होनी चाहिए? कंसिस्टेंट. देयर शुड बी कंसिस्टेंसी. तो जिस प्लेयर की कंसिस्टेंसी ज्यादा होगी दैट विल बी सिलेक्टेड. तो फर्स्ट प्रायोरिटी पे हम किसको रखते हैं? सेंट्रल टेंडेंसी को. एंड सेकंड प्रायोरिटी पे रखते हैं डिस्पर्शन को. कभी अगर हमने उल्टा कर दिया, अगर हमने डिस्पर्शन को फर्स्ट प्रायोरिटी में रख के सिलेक्शंस कर लिए, तो उससे क्या होगा, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? लेट्स सी. कि अगर हमने किसी बॉलर को सेलेक्ट किया, उसके पास्ट मैचेस का रिकॉर्ड क्या है? फर्स्ट मैच में परफॉर्मेंस 0 विकेट, सेकेंड मैच में अगेन 0 विकेट,
Third match again 0 wicket. Now fourth के लिए we are thinking whether to keep that player or not. क्या उस प्लेयर को हम रखें या नहीं रखें? तो अगर हम उसकी कंसिस्टेंसी की बात करें तो वो तो बहुत अच्छी है। परफॉर्मेंस बिल्कुल अच्छी एक जैसी है। इसमें कोई वेरिएशन नहीं है, कोई फ्लक्चुएशन नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू डिस्पर्शन दिस प्लेयर विल गेट सेलेक्टेड, ये सिलेक्ट हो जाएगा। बट हमें पहले फोकस कहाँ पे करना है? एवरेज पे। अगर एवरेज ही 0 है तो हम आगे बढ़ेंगे ही नहीं। तो देयरफॉर सेंट्रल टेंडेंसी इज नोन एज एवरेज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड डिस्पर्शन इज नोन एज एवरेज ऑफ सेकेंड ऑर्डर। ओके, तो चलिए ये सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए हैं। नाउ लेट अस बिगिन विद द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज रेंज। नाउ रेंज क्या होता है? रेंज वर्ड आपने प्रैक्टिकल लाइफ में सुना भी होगा। जब भी हम मार्केट में जाते हैं कुछ परचेज करने के लिए, फॉर एग्जाम्पल यू आर गोइंग टू मार्केट फॉर परचेजिंग अ मोबाइल फोन, और आपने शॉपकीपर को बोला है मोबाइल फोन दिखाने को, तो सबसे पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन जो शॉपकीपर आपसे पूछेगा वो क्या है? किस रेंज में आपको देखना है? ही विल टॉक अबाउट द रेंज। वो आपसे रेंज पूछेगा कि आपको बताना है किस रेंज में आपको आपका फोन देखना है। तो फिर आप उसमें आंसर करोगे यस आई वांट टू सी बिटवीन 20 to 30,000। तो आपने उसको एक रेंज दिया। रेंज देने का मतलब क्या है? यू आर गिविंग द टू वैल्यूज, वन इज द लोअर वैल्यू एंड सेकेंड इज द अपर वैल्यू, और यू कैन से द लार्जेस्ट वैल्यू, स्मॉलेस्ट वैल्यू, हाईएस्ट वैल्यू, लोवेस्ट वैल्यू, बहुत सारे नोटेशंस हो सकते हैं। तो एक स्मॉलर वैल्यू होगी और एक बिगर वैल्यू होगी, ये दो वैल्यूज आप देंगे, दैट इज नोन एज अ रेंज। तो एक लिमिट आपने डिफाइन कर दी है कि इस लिमिट के अंदर मुझे परचेज करना है। तो रेंज को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? रेंज दुनिया का सबसे सिंपल फॉर्मूला है, दैट इज द लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू। तो रेंज इज द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट वैल्यू एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू। कुछ प्लेसेस पे इसको लिखा जाता है हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू। तो द नोटेशन कैन बी एल माइनस एस, लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट, और इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट, वन एंड द सेम थिंग, एक ही बात। ओके, तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर रेंज। सो इफ लेट्स से अ सीरीज इज गिवन, एक सीरीज आपको दे रखी है और उसका रेंज कैलकुलेट करना है, 10, 15, 40, 25, 30, 18। नाउ इस सीरीज में से आपको रेंज कैलकुलेट करना है, देन व्हाट विल यू डू? सबसे पहले आपको देखना है द हाईएस्ट वैल्यू। हाईएस्ट वैल्यू इज 40, lowest value is 10. Now the difference is 30. Therefore, range is equal to 30. Range आपका आ चुका है 30. So this is the very simple formula. Now, range is the part of absolute measure. तो इसके पीछे कुछ भी यूनिट लग सकता है. If all the figure are in rupees, then you will use rupees. If they are in kilogram, then you have to use kilograms. तो जो यूनिट आपको सीरीज में दे रखा है, you have to use the same unit. नाउ व्हाट अबाउट द रिलेटिव मेजर? रिलेटिव मेजर का मतलब हो गया कि हम उसको रेशियो या परसेंटेज में एक्सप्रेस करेंगे। तो रिलेटिव मेजर इज नोन एज द कोफिशिएंट। सो द फॉर्मूला फॉर कोफिशिएंट ऑफ रेंज, कोफिशिएंट ऑफ रेंज का फॉर्मूला क्या होगा? एल माइनस एस डिवाइडेड बाय एल प्लस एस इंटू 100, or it can also be written as h minus L upon h plus L into 100. Highest minus lowest upon highest plus lowest multiplied by 100. So this shows coefficient of range. तो कोफिशिएंट ऑफ रेंज में आपको कुछ भी यूनिट नहीं लगाना है, रुपीज, किलोग्राम, नथिंग यू हैव टू यूज। ओके, so in the same example which we have taken above, let's find out the coefficient of range. So 40 minus 10 upon 40 plus 10 multiply by 100. So 30 upon 50 into 100. So you are getting 60%. So this is your coefficient of range. This is the coefficient of range. तो ये एक simplest way है to calculate the range.
Okay. Now, let us understand some more things. So let's write the same series again here. 10, 15, 40, 25, 30, and 18. Now we are talking about change of origin. Change of origin आपको याद होगा. We have used the term in central tendency chapter also. And again we are using here change of origin. Change of origin का मतलब क्या है? पूरी सीरीज में कोई भी एक पर्टिकुलर नंबर या तो हम ऐड करेंगे और वी विल सब्ट्रैक्ट माइनस करेंगे, प्लस या माइनस. तो अगर मैं इस पूरी सीरीज को 10 से इंक्रीज कर देता हूं, इफ आई इंक्रीज द सीरीज बाय 10, then what will be the new range? So at present the given range, at present the range जो हमने कैलकुलेट किया है, that is 30. Now if I am increasing all the observation by 10, अब सारे observation 10 से increase हो रहे हैं, then what will be the new range? Okay, let's check. If I am doing plus 10, so observations will become 20, 25, 50, 35, 40, and 28. Now the new range will be highest value of 50, lowest value 20, and the range is again 30. That means change of origin का range पे कोई impact नहीं आया है. Range remains unaffected due to change of origin. तो चेंज ऑफ ओरिजिन रेंज को बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं करती है. ऑलराइट. So whether you are adding or subtracting, range will remain same. Range will remain same. All right. Then let us try with change of scale. Change of scale means multiply or divide. If you multiply the series or divide by series a particular number, then what will happen? Let's multiply with 2 and check. So 10 will become 20, then 30, 80, 50, 60, and 36. Now, the highest value is how much? 80. Lowest value is 20. And now the range is 60. अगर मैंने सारे ऑब्जर्वेशंस को डबल किया है, तो आपका रेंज भी पहले के कंपैरिजन में क्या हो चुका है? डबल हो चुका है. That means change of scale affects range, but change of origin do not affect range. Okay? यहां तक क्लियर हो गया आई थिंक. तो ओरिजिन का इफेक्ट नहीं होगा, स्केल का इफेक्ट होगा और उसी रेशियो के अंदर होगा. ऑलराइट. दिस इज चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल. तो अब अगर आपको एक सीरीज का गिवन है रेंज, let's say there is any kind of series. Now series is not given, but question is saying the range of the given series is 40. Now question is saying there is, if all observations are decreased by 25, all observations are decreased by 25, then find out new range. So what will be the new range? If all observations are decreased by 25, what will be the new range? चलिए फटाफट एक बार आंसर कर दें. Come on everyone. A very simple question. Range of a given series is 40. All observations are decreased by 25. What will be the new range? What will be the new range? Okay, Kinjal is saying 15. Kambeshwari says 40. Muskan and Sakshi says 40. Range will remain same. Yes. So this is basically change of origin, and because of change of origin, the range will remain same. So range will remain 40. Okay. Let's try one more.
So those who have given the wrong answer, you have to be very careful. Now this time, the range of a series is, let's say, 50. All observations are divided by 5. What will be the new range? All observations are divided by 5. What will be the new range? Okay, चलिए अब फटाफट से आंसर कर दें. Range is 50. All observations are divided by 5. What will be the new range? Yes, 10. 50 divided by 5, that is 10. So most of you have given answer 10. So Anuj Kumar, Lakshmi, Anushka, Ariharan, everyone has given 10. Then Sakshi 10, Muskan 10, Kinjal 10, Anil 10, Yash Kumar 10. Yes. So 10 is the perfect answer. Some of you have given 25, some have given 50, some 100. So there you have to be again very careful. This is change of scale. और जब भी change of scale होता है, it will get impacted in the same ratio. So 50 divided by 5, it will become 10. Okay. Now 14.2.1. The first example. Following are the wages of 8 workers expressed in rupees. Find out the range and its coefficient. Range and coefficient दोनों आपको calculate करना है. So for range, find out the highest and lowest value. Highest value is 96 and lowest value is 50. So 96 minus 50. This is how much? 46. You have to answer rupees 46. All right. चलिए फटाफट से रेंज कोफिशिएंट ऑफ रेंज कैलकुलेट कर दें. So 96 minus 50 upon 96 plus 50 into 100. This is 31.5. Perfect. So this is basically range. So I think it is very much clear. So अभी तक जो हमने डिस्कस किया है, all these was individual series. If let's say the series is discrete, then what will happen? X and then F. 10, 20, 30, 40. Frequency 100, 80, 150 and 60. Now, this is the given series and again you have to find out the range. Range आपको calculate करना है. So what will be your answer? So anyone with this answer? What will be the range? X and F both are given. आपको range calculate करना है. Come on everybody. So in this case, if you see X and F both are given. X and F both are given. Now, difference आप किसका लेंगे? What
should be the highest value. Shall we take from x or from f? So आपको ऑलवेज एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, फ्रीक्वेंसी का मतलब कोई नंबर नहीं है। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है? लेट्स से दिस 10 is getting repeated 100 times. So 100 is not a number. Number 10 is written 100 times. Okay. Similarly, 20 is written 80 times, 30 is written 150 times, and 40 is written 60 times. So all these are not the available numbers. These are the repetitions. Therefore, the highest number is 40, lowest number is 10, and the difference will be 30. So range is equal to 30. Okay. Range is equal to 30. So you don't have to find fx. You don't have to calculate the difference of frequency. Only difference of x. सिर्फ x का ही difference आपको लेना है और कुछ भी नहीं करना है. Okay, understood? Now, the next thing, if continuous series is given, then what we have to do? So let's take the next example, 14.2.2. This time the series is continuous, 50 to 54, 55 to 59, and so on. Now, again, you have to see the smallest and highest value. So, frequency से हमें कोई मतलब नहीं है. We don't need frequency. We just need the smallest and highest value. So, but before that, you must check that series must be exclusive. Series कौन सी होनी चाहिए? Exclusive होनी चाहिए. But here the series is inclusive because 54 and then 55, the number are not same. The number are different. Therefore, series is inclusive. तो जब भी inclusive series है, तो आप lower limit में क्या करते हैं? 0.5 less, upper limit में 0.5 add. Okay, but we do not require the complete series. हमें सिर्फ smallest value चाहिए and highest value चाहिए. So therefore, we will convert only these two. So highest value will be 74.5, lowest value will be 49.5, and range will be difference of these two. Range will be difference of these two, that is 25. And what is the unit? Unit is in kilograms, so it is 25 kilograms. This is your range. Now, if you want to find out the coefficient of range calculate करना है, then highest value 74.5 minus lowest value 49.5 divided by 74.5 plus 49.5 and then multiply by 100. Okay. So just apply and get the answer. So you are getting how much? 25 divided by 124 into 100. That is 20.16. This is your coefficient of range. All right. So in this way, you can calculate coefficient of range. Now, sometimes information are given in terms of equation. Then how can we calculate range? So, to calculate range of y, y का रेंज कैलकुलेट करना है, तो यू मस्ट अंडरस्टैंड द फॉर्मेट y is equal to a plus bx. दिस इज द मोस्ट कॉमन फॉर्मेट ऑफ द इक्वेशन. एक इक्वेशन का एक कॉमन फॉर्मेट है y is equal to a plus bx. नाउ इन दिस a जो है ये क्या हो रहा है? दिस कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड. तो दिस a इज नोन एज चेंज ऑफ origin. Change of origin. And this b is basically change of scale. Why change of scale? Because ये x के साथ में, x आपका क्या है? वेरिएबल है. तो x के साथ में b या तो मल्टीप्लाई होगा या डिवाइड होगा. तो देयरफॉर दिस इज अ चेंज ऑफ स्केल. एंड a जो है x के साथ में प्लस या माइनस होगा. देयरफॉर इट इज चेंज ऑफ ओरिजिन.
नाउ जब भी हम बात करेंगे डिस्पर्शन की, तो चेंज ऑफ ओरिजिन का इफेक्ट नहीं होगा। तो इग्नोर ए को आपको ऑलवेज इग्नोर कर देना है, जो भी कांस्टेंट होगा उसको आपको ऑलवेज इग्नोर कर देना है। एंड ऑलवेज कंसिडर स्केल, तो स्केल को हम कंसिडर करेंगे। नाउ कैसे कंसिडर करना है, लेट अस अंडरस्टैंड। So now you want to find out range of y and range of x will be given in the question. So your formula will be range of y is equal to mod of b multiply by range of x. तो इस इक्वेशन से आपको क्या निकालना है, b निकालना है और उसका करना है मॉड्यूलस। आपको उसका साइन नहीं लेना है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो, यू डोंट हैव टू कंसिडर द साइन, जस्ट मॉड b मल्टीप्लाई बाय रेंज ऑफ x. So if I write one equation, y is equal to 10 plus 2x. Range of x is 5. Find out range of y. तो पहले क्या करेंगे, इस 10 का तो कोई यूज नहीं है, ये 2 हो रहा है मल्टीप्लाई, तो यू हैव टू यूज मॉड ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय रेंज ऑफ x. तो 2 मल्टीप्लाई बाय 5 gives 10. So this is your range. Okay, understood? Now let's take one more example. 14.2.3. The relationship between x and y is given by 2x plus 3y equal to 10. Range of x is 15. Find out range of y. So first step is arrange the equation in the format. इस फॉर्मेट में आपको इक्वेशंस को अरेंज करना है. So 3y is equal to 10 minus 2x. Therefore y is equal to 10 by 3 minus 2 by 3x. 10 by 3 minus 2 by 3x. So range of y आप कैसे निकालेंगे, mod of b into range of x. So 2 by 3 into 15. You are getting how much? 10. So this is your result. तो always आपको क्या करना है, arrange the equation. First step is arrange the equation. Equation को आपने arrange कर लिया. Then next step क्या है, use the formula mod of b multiply by range of x, and then you will get the answer. Okay, Suraj? Anjali is saying Rx कैसे calculate किया? See, Rx is already given in the question. It is already written that range of x is 15. So range of x is already given. You have to find only range of y. Okay. Let's take one more example. 2x plus 4y is equal to 40. Range of x is 5. Find out range of y. Okay. So arrange the equation. 4y is equal to 40 minus 2x. Therefore, y is equal to 40 upon 4 minus 2 upon 4x. So 2 upon 4 means 1 by 2. So therefore, range of y will be 1 upon 2 into range of x. So your answer will be 5 upon 2. So in this way, you can easily calculate range of y. Right?
Now, let's take the next point. So range we have completed. Now, after completing range, Riti is saying 1/2 कैसा है? We have just cancelled 2/4 को जब आप cancel करेंगे, you are getting 1/2, 1 in numerator and 2 in denominator. Okay. So after computation of range, we are calculating interquartile range. Now, interquartile range. अब ये क्या होता है? Now, word quartile भी included है, range is also included. That means you have to mix both of them. क्वार्टाइल्स कितने होते हैं ये हमने सेंट्रल टेंडेंसी चैप्टर के अंदर पढ़ा है। तो क्वार्टाइल्स, देयर आर थ्री क्वार्टाइल्स, Q1, Q2, Q3। फर्स्ट क्वार्टाइल, सेकंड क्वार्टाइल एंड देन थर्ड क्वार्टाइल। सबसे छोटी वैल्यू Q1 की, उससे बड़ा Q2 एंड हाईएस्ट इज Q3। नाउ क्वार्टाइल में से आपको रेंज कैलकुलेट करना है, देन इट विल बिकम इंटर क्वार्टाइल रेंज। अगर आप क्वार्टाइल्स का रेंज कैलकुलेट करते हो, इट बिकम्स इंटर क्वार्टाइल रेंज। सो व्हाट इज द हाईएस्ट वैल्यू? Q3, and what is the lowest value? Q1. So this is interquartile range. That's it. This is simply interquartile range. If we have, if question is talking about semi interquartile range. Now semi का मतलब क्या होता है? आधा, half. Semi means half. So just divide by 2. So Q3 minus Q1 upon 2. Q3 minus Q1 upon 2. This is semi interquartile range. Okay. Then this semi interquartile range is basically known as quartile deviation. इसी को हम क्या बोलते हैं? Quartile deviation. Semi interquartile range is commonly known as quartile deviation. So how to calculate? Let's take one example. So let's say some values are given: 8, 12, 20, 24, 36, 40, and then 60. All these values are given. Now, for calculating the quartile deviation, what is the first step? You have to find out the quartiles, Q1 and Q3. So Q1 and Q3 को कैसे निकालना है? This we have discussed in central tendency chapter. So फटाफट से calculate कर लेते हैं. First step is arrange the series. So series is already arranged here. Now find out the rank of Q1. Rank of Q1. So 7 observations are there. 7 plus 1 by 4. That is second rank. तो सेकंड पोजीशन पे कौन है? 12। सेकंड पोजीशन पे कौन है? 12। Therefore Q1 is equal to 12. Similarly, rank of Q3. Q3 का रैंक, तो Q3 कैसा आएगा? 3 into 7 plus 1 by 4. You are getting 6th rank, and 6th rank पे कौन सी वैल्यू है? So Q3 is equal to 40. तो 6th प्लेस पे आपका वैल्यू 40 है, तो दिस इज योर थर्ड क्वार्टाइल। तो फर्स्ट क्वार्टाइल एंड थर्ड क्वार्टाइल दोनों आपके पास आ चुके हैं। नाउ व्हाट यू हैव टू डू नेक्स्ट? नेक्स्ट इज क्वार्टाइल डेविएशन। सो फॉर क्वार्टाइल डेविएशन, इट इज Q3 minus Q1 upon 2. How much you are getting? 14. So quartile deviation is equal to 14. Quartile deviation is equal to 14. If you have to calculate interquartile range, then your answer will be 28. But if you have to calculate semi-interquartile range or quartile deviation, then your answer will be 40. Okay.
So in this way, you can calculate quartile deviation. Now there is one more thing, that is coefficient of quartile deviation. Coefficient of quartile deviation. Now coefficient कैसे calculate करना है? Very simple. Q3 minus Q1 upon Q3 plus Q1 multiply by 100. Q3 minus Q1 upon Q3 plus Q1 multiply by 100. This is your formula. So 40 minus 12 upon 40 plus 12 multiply by 100. So in this way you will get your answer, that is coefficient of quartile deviation. तो फटाफट से आंसर कैलकुलेट कर लें एंड बता दें क्या रिजल्ट आ रहा है. For coefficient of quartile deviation, what is the final result? So who is giving the answer? Kameshwari, Anuj, Kinjal, Akansha. I'm waiting for your answers. Yes. So everybody has given 53.84 or 85. Perfect. 53.84 or 85. This is the answer. So these are the simple formulas for calculation of quartile deviation and interquartile range. So let's do some questions from here also. Yes, so these are the formulas. 14.2.18. Following are the marks of 10 students. Find quartile deviation and also its coefficient. तो क्वार्टाइल डिवीजन भी निकालना है, उसका कोफिशिएंट भी चाहिए आपको. तो फर्स्ट स्टेप इज अरेंज द सीरीज. तो सीरीज को पहले अरेंज करते हैं इन असेंडिंग ऑर्डर. ओके. देन नेक्स्ट स्टेप इज टू फाइंड आउट द रैंक ऑफ Q1. तो Q1 का फॉर्मूला होता है n+1/4. So n+1/4. So how much we are getting? 10+1/4. It is 2.75. So 2.75 is the rank of Q1. Now let's calculate second plus 0.75, then third minus second. So finally we are getting 46.5 as Q1. तो Q1 का वैल्यू आ चुका है 46.50. Similarly, you have to calculate Q3. So rank will be how much? 8.25, and apply the formula 8 plus 0.25, ninth value minus eighth value. So 65 plus 0.25 into 75 minus 65. We are getting 67.50. So 67.50 is your Q3. तो Q1 and Q3 दोनों आपके पास अवेलेबल है. Now next step is to apply the formula for quartile deviation. So 67.5 minus 46.5 and then divided by 2. You are getting 21/2, that is 10.5. This is the quartile deviation. And for coefficient, 67.5 minus 46.5 divided by 67.5 plus 46.5 into 100. So you can calculate this and get the answer for the coefficient.
Okay. So how much is the answer? 18.42. 18.42 is your answer. Now, again, the equation concept, the formula is remaining the same. जैसा formula आपका range में था, same to same वैसा formula आपका quartile deviation के लिए है. तो range का formula था आपका range of y is equal to mod of b into range of x. Similarly, the formula for quartile deviation will be mod of b multiplied by quartile deviation of. So this is the formula. The first step is to arrange the equation. Equation को पहले arrange कर लें. So 3x plus 6y is equal to 20. This is the given equation. Then quartile deviation of x is 6. x का quartile deviation कितना है 6. तो आपको y का quartile deviation calculate करना है. तो चलिए फटाफट arrange कर लें. 6y is equal to 20 minus 3x. So y equal to 20 by 6 minus 3 by 6. After cancellation, what we are getting? 1 upon 2. So quartile deviation of y is equal to mod of minus 1 by 2 into quartile deviation is 6. So 6 upon 2, 3. 3 is your final answer. 3 is the final answer. So in this way, you can easily calculate your quartile deviation. Okay. Understood, everybody? Okay. Now the next example is based on continuous series. Find an appropriate measure of dispersion from the following data. Now, one very important thing is for open and class interval. For open and class interval, quartile deviation is the best measure of dispersion. अगर क्लास इंटरवल आपका ओपन एंडेड है तो फिर हम क्वार्टाइल डेविएशन को बेस्ट मानते हैं. बेस्ट क्यों मानते हैं? व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दैट? सो क्वार्टाइल डेविएशन पता है डिवाइड्स एन अरेंज सीरीज इनटू 4 equal parts. So Q1, Q2, Q3. And for calculation of quartile deviation, we need only Q1 and Q3. So each and every portion have 25% of observation. एंड हमें यहाँ पे Q1 और Q3 ही चाहिए. सो वी नीड ओनली मिडल 50% ऑफ ऑब्जर्वेशन. क्वार्टाइल डेविएशन इज बेसिकली बेस्ड ऑन मिडल 50% ऑफ ऑब्जर्वेशन. स्टार्टिंग के 25% से कोई मतलब नहीं है, लास्ट के 25% का भी कोई यूज नहीं है. तो क्वार्टाइल डेविएशन इज बेस्ड ऑन द मिडल 50% ऑफ ऑब्जर्वेशन. तो जब भी सीरीज ओपन एंडेड होगी, इट इज ओपन फ्रॉम द बिगिनिंग और ओपन फ्रॉम द एंडिंग. तो दैट्स वाई उसका क्वार्टाइल डिवीजन पे कोई इंपैक्ट नहीं आता है. अगर सीरीज ओपन एंडेड भी है तो उसका क्वार्टाइल डिविएशन सेम रहेगा. देयर विल बी नो इम्पैक्ट. So that is why quartile deviation is treated as the best measure of dispersion in case of open end class interval. तो इस क्वेश्चन में कहाँ हमें दिख रहा है क्लास इंटरवल ओपन एंडेड है? जहां बिगिनिंग में लिखा मिल रहा है आपको अप टू 20. दैट मीन्स ये कहीं से भी बिगिन हो सकता है एंड दिस टाइप ऑफ इंटरवल इज ओपन एंडेड. ओके. Then other class intervals are given. Now you have to find out quartile deviation. So quartile deviation के लिए series is already arranged. Then you have to find out the cumulative frequency. So your frequency was 5, 5, 11, 14, 7, and then this was the frequency. So one by one we have added and cumulated the frequency. 5,
then 5 plus 11, 16, plus 14, 30, plus 7, 37, and plus 3 it is 40. तो हमने पहले क्या कर लिया है, CF को कैलकुलेट कर लिया, and after calculating the CF, we can calculate the quartiles. So formula for Q1 is L plus rank, so N by 4 minus C upon F into I. सो कौन से इंटरवल में आएगा फर्स्ट क्वार्टाइल, तो उसके लिए आपको रैंक कैलकुलेट करना है, रैंक ऑफ फर्स्ट क्वार्टाइल n अपॉन 4, तो 40 अपॉन 4 इज 10. सो 10 विल बी कवर्ड इन विच इंटरवल, 10 कौन से इंटरवल में आ जाएगा आपका, 10 विल कवर इन 20 to 40. 10 आपका फर्स्ट में ओनली अप टू 5 ऑब्जर्वेशन है, देन 16, 30, 37 and then 40. So 10 will be covered in the class interval of 20 to 40. So therefore lower limit is 20, rank is 10 minus C upon frequency. Frequency is how much, 5, and yes C को भी कितना लिखना है, 5. No, frequency for second interval is 11, and then I is 20. ओके, तो Q1 जैसा हमने पहले किया है, सेम टू सेम उसी कॉन्सेप्ट को आपको फॉलो करना है, एंड देन यू विल गेट Q1 29.09. इन द सेम पैटर्न यू हैव टू कैलकुलेट Q3, और Q3 आपका रिजल्ट आएगा कितना, 60. नाउ नेक्स्ट स्टेप इज टू फाइंड आउट द क्वार्टाइल डेविएशन, तो Q3 माइनस Q1 अपॉन 2. तो सीरीज चाहे कोई भी हो, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस, द फॉर्मूला फॉर क्वार्टाइल डेविएशन रिमेन्स सेम. तो क्वार्टाइल डेविएशन का सेम रहेगा, एंड उसका कोफिशिएंट का फॉर्मूला भी सेम रहेगा. देयर विल बी नो चेंज इन द फॉर्मूला विद रेस्पेक्ट टू सीरीज. ओके, so this is your quartile deviation. So I think everybody has understood till here. So out of the 4 measures of dispersion, अभी तक हमने 2 measure of dispersion को डिस्कस कर लिया है. First was range and second quartile deviation. This is based on different topic. Okay, so before moving forward to mean deviation, let us take a small break of 10 minutes, and then we will be continuing with the topic mean deviation. Okay, so let's take a break.
Okay. Welcome back, guys, again after the break. So let us begin with the next point, that is measures of dispersion का mean deviation. Now, mean deviation, so range we have completed, quartile deviation we have completed. ये दोनों parts जो थे थोड़े smaller थे. Now, mean deviation is quite big. So in case of mean deviation, it is taken from either mean. So mean deviation is taken from mean, median, or mode. So what is the basic formula for the mean deviation? So mean deviation is equal to sigma mod x minus central value upon n. Sigma mod x minus central value upon n. Now, what is the central value? Central value का मतलब क्या है? Central value means it can be the mean, or it can be median, or it can be mode. So if mean deviation is taken from mean, then the formula will be sigma mod x minus x bar upon n. Sigma mod x minus x bar upon n. Mean deviation from median. If we have to calculate mean deviation from median, then formula will be sigma mod x minus m upon n. And if mean deviation is from mode, then sigma mod x minus z upon n. X minus z upon n. So all these are the formula for mean deviation. Now let's take some example based on this. X is given 2, 4, 6, 8, and 20. The total is 40. Now we want to take mean deviation from mean. अगर आपको mean से deviation लेना है, तो we have to calculate arithmetic mean first. So 40 divided by total number of deviations is 8. The most important thing is you have to use modulus. Modulus का मतलब है आपको साइन को इग्नोर करना है. अगर नेगेटिव नंबर भी आता है तो आपको माइनस का साइन यूज नहीं करना है. So x minus x bar is 8. So 2 minus 8. 2 minus 8. वैसे तो minus 6 होता है, but you have to write only 6 because of modulus. 4 minus 8. 4, 2, 0, 12. So deviation is taken. Now the total is 24. Total आ चुका है 24. Now as per the formula, let's substitute the value. 24 divided by n. n कितना है आपका 5. So result will be 4.8. So this 4.8 is your mean deviation from mean. If you require mean deviation from median, तो आपको पहले median calculate करना पड़ेगा. So median क्या होगा? Median is middle most observation of an arranged series. So series is already arranged and middle term is 6. So you can calculate median by our normal procedure. So median आपका कितना आ चुका है 6. Now this time you have to take deviation from median, that is 6. 2 minus 6 is 4, then 2, 0, 2, and then 14. So what is the total? 22. So mean deviation from median will be 22 upon 5. You are getting how much? 4.4. 4.4. So in this way, you can calculate mean deviations. Okay. So this is
individual series. The formula is for individual series. Now, in case of mean deviation, the formula for discrete series will be different from individual because यहाँ पे frequency का effect होता है. Frequency की वजह से आपका formula पूरा change हो जाएगा. तो जहां पर भी frequency आएगी तो दोनों places पे आपको frequency का effect देना पड़ेगा. Okay. So before moving towards that, first complete with coefficient of mean deviation. So let's write coefficient of mean deviation. So again, the formula is very simple. Mean deviation divided by central value and then multiply by 100. Mean deviation divided by central value into 100. If mean deviation is taken from mean, then you have to divide by mean and then multiply by 100. If mean deviation is taken from median, then divide with median. And similarly, if mean deviation is taken from mode, then divide by mode, multiply by 100. Okay, so this is the formula. So let's calculate mean deviation from mean. So mean deviation was 4.8 divided by x bar is 6, x bar is 8, and then multiply by 100. So how much you are getting? 60%. 60%. दिस इज कोफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन. तो सिंपली क्या करना है, जो आपका फॉर्मूला है उसके अंदर आप वैल्यू पुट करें, सीधा सा आपका आंसर आ जाएगा. सिमिलरली लेट्स कैलकुलेट फ्रॉम मीडियन आल्सो. तो मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, mean deviation is 4.4, median is 6, and then multiply by 100. So now you can calculate the percentage. So what's the percentage? 73.3%. 73.3%. This is your mean deviation. Okay. Understood, everyone? All right. Okay. Now, let's take some question from here. 14.2.4. What is mean deviation about mean from the following numbers? Now, question है अभी कुछ भी नहीं का. When nothing is mentioned, by default you can take from mean. जब क्वेश्चन ने कुछ नहीं कहा है तो आप मीन से लेंगे, बट यस यहाँ पे क्वेश्चन ने क्लियर किया है मीन डिविएशन अबाउट मीन, क्वेश्चन ने बोल दिया है तो फिर हम मीन से डिविएशन लेंगे. Ansh is asking about sampling fluctuation. See, this is not connected with this topic, so we have to complete this first, right? Otherwise, it will become hodgepodge. So mean deviation about mean, we are talking about. So let us calculate arithmetic mean first. Add all the observation divided by number of observations. So 5 plus 8, 10 plus 10 plus 12 plus 9 divided by 6. So arithmetic mean, we are getting how much? 9. X bar is equal to 9. Now you have 5 minus 9. 5 minus 9 gives 4. 8 minus 9 is 1. 10 minus 9 is 1. Then 12 minus 3 is 9, 12 minus 9 is 3. And 9 minus 9 is 0. So sum of the deviations is 10. Now as per the formula, 10 divided by number of observations, that is 6. Deviation is 1.67. 1.67. Okay.
Next, fifth one. This is the exactly similar question. Find out the mean deviation about median. तो क्वेश्चन ने क्लियर कर दिया है. You have to calculate about the median. So your first step will be arrange the series and calculate median. So arrange the series in ascending order and then find out the middlemost observation. So there are seven observations. Therefore, middlemost observation here is 70. So 70 is your median. Now you have to take deviation of all observation from 70. So 50 to 61. Now apply the same formula 61 divided by total number of observations. So how many number of observations are there? Seven numbers are there. Therefore, your result will be how much? 61 upon 7. So 8.714. Now the figures are in thousand. क्वेश्चन आपको ऊपर लिख रखा है प्रॉफिट इज इन थाउजेंड ऑफ रुपीज so you have to multiply with 1000 then you will get rupees 8714.28. Okay, the figures were in thousand. Now the coefficient of mean deviation. Now how to calculate the coefficient of mean deviation? Simply mean deviation divided by median into 100. So mean deviation is 8714.28 divided by median 70,000 into 100. So you are getting 12.45. This is your coefficient of mean deviation. Okay. So any doubts still here? यहाँ तक कोई भी डाउट है अगर किसी को तो पूछ सकते हैं. Anyone with the doubts? No? Then the next will be mean deviation in discrete and continuous series. Mean deviation in discrete or continuous series. Now formula will be same for both. So mean deviation will equal to sigma f mod x minus central value upon sigma f. तो फॉर्मूला का पैटर्न बिल्कुल सिमिलर है. जस्ट वी हैव यूज फ्रीक्वेंसी इन बिटवीन. ओके, तो हमने फ्रीक्वेंसी को यूज कर लिया है. सो अगर आप मीन डेविएशन मीन से कैलकुलेट कर रहे हैं योर फॉर्मूला विल बी सिग्मा एफ मॉड एक्स माइनस एक्स बार अपॉन सिग्मा एफ. ओके, नाउ कई बार एक कॉमन डाउट क्वेश्चन स्टूडेंट्स पूछते हैं, कैन वी कैंसल दिस सिग्मा एफ विद सिग्मा एफ? न्यूमरेटर में भी सिग्मा एफ लिखा है, डिनोमिनेटर में भी सिग्मा एफ लिखा है, तो उसको कैंसिल कर दें. तो इज इट पॉसिबल टू कैंसल these two? No, you cannot cancel these because numerator में only sigma f नहीं है, sigma f into mod x minus x bar. This is the complete term, so you cannot cancel. आप इसको cancel नहीं कर सकते हैं. Okay. Similarly, if mean deviation is from median, तो sigma f mod x minus m upon sigma f. Okay. Then Ashinka is saying, can you explain quartile? See, I've already explained in detail about the quartiles because it is around 20 to 30 minutes concept. So we have already discussed in the MCT chapter, central tendency chapter. You can go through with that. So link is available on your ICAI application as well. Then it is also available on YouTube also and on my channel also on the YouTube.
सो आप कहीं से भी जाकर के उसको स्टडी कर सकते हैं, तो इट इज अवेलेबल। Okay, so now let's get the next 18.2.6. Compute the mean deviation about arithmetic mean from the following data. So series is given, x and f is given. So first step is to find out arithmetic mean. The formula for arithmetic mean is sigma fx upon sigma. So you can calculate fx here. 1 into 5, 3 into 8, 5 into 9, 7 into 2, 9 into 1. Then you can find out the total. So 24 plus 5 is 29, plus 45 is 74, plus 14 is 88, and plus 9 is 97, divided by the total number of observations. So how much you are getting? 3.88. So your arithmetic mean is coming out as 3.88. Okay. Now, next step is to take deviation mod of x minus x bar. So 1 minus 3, you will get 2.88. 3 minus 3.88, 0.88. 5 minus 3.88, so 1.12. 7 minus 3.88, 3.12. Then 5.12. So this is mod of x minus x bar. Now multiply with the frequency. So you have to multiply these two, column number second and column number third. Just multiply them. After the multiplication, you will get this total 42.88. This is your total. Now apply and get your result. Then Mr. Rosario is asking, can we solve the problem by using the calculator? Yes, I have already taught you in the previous session how to use M plus button, M minus, MRC button. So you can use all those and speed up your calculations. Okay. So 1.72 is your mean deviation. Now next is the coefficient. Coefficient के लिए आपको क्या करना है? Mean deviation 1.72 divided by the mean, that is 3.88, and then multiply by 100. So 44.33 is your coefficient of mean deviation. So in this way, you will get the coefficient. Understood? Now, the next one is a continuous series question. Mean deviation about median you have to calculate. So now whenever deviation is taken from median, so first thing is to calculate the median. So for calculation of median, you have to follow the all those steps. So let's calculate. Class interval is given 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80. This is class interval. Frequency is 8, 12, 20, and 10. Then find out the CF. 8 plus 12 is 20, plus 20 gives 40, and plus 10 is 50.
Okay, this is the CF. Then find out the rank of median. Rank of median, it is n upon 2. That is 25. So 25 will cover in which interval? In the interval of 60 to 70. So apply the formula for median, L plus n by 2 minus C upon F into I. The lower limit is 60 plus rank is 25, C is 20, frequency is also 20, and multiply by I. The class interval is 10. Okay. So the result will be 62.5. This is your median. Okay. Now, after calculation of median, just you have to take the deviation. So x, now you have to take the deviation from mid value. So mid value is required here. So you can write here x 40 plus 50 by 2. It will give you 45, then 55, 65, 75. Then mod of x minus median. Median is how much? 62.5. So 17.5, 7.5, 2.5, and then 12.5. Next step is f into x minus m. So you have to multiply these two and then calculate the total. इन दोनों को आप multiply करें and then find the total. And at last divided by sigma. Okay. चलिए फटाफट एक बार कर लिए and give the answers. राजेश कुमार is asking, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है? See, in exam most of the questions are of small type और average type. इतने बड़े क्वेश्चन एग्जाम में रेयरली आते हैं, लेकिन 100 में से ऑफ कोर्स 3 4 5 क्वेश्चंस कैन बी ऑफ दिस कैटेगरी. ओके, बट सारे क्वेश्चन कभी भी लेंदी नहीं होते हैं. किसी भी टॉपिक में से एक दो क्वेश्चन, दो चार क्वेश्चन कभी लेंदी हो सकते हैं. ऑलराइट. The total is 405, and after achieving this total, just divide it by sigma f, and you will get your answer 8.1 kilogram. So this is your mean deviation about median. And the last step is to find out the coefficient. So for coefficient, it is mean deviation divided by median into 100. So 12.96% is your coefficient of mean deviation. All right. So all this is completed. Now again the same pattern based on the equation. तो जो pattern आपने range में follow किया है, quartile deviation में follow किया है, same again we have to follow in the mean deviation. So here again the equation is given 4x plus 3y plus 11 equal to 0. Mean deviation of x is 5.4. Then what is the mean deviation of y? So arrange the equation first. 3y is equal to minus 11 minus 4x. Y is equal to minus 11 by 3 minus 4 by 3 x. Okay. Now, mean deviation of y is equal to mod of b multiplied by mean deviation of x is 5.4. Now, cancel this and get your answer. So 7.20 is your mean deviation. Okay.
Okay, so this is done. Now let's try some questions from the back. पीछे से कुछ क्वेश्चंस को फटाफट से गो थ्रू कर लेते हैं एंड स्टैंडर्ड डिवीजन वी विल कीप फॉर द नेक्स्ट क्लास. ऑलराइट, so let's solve some questions. Okay, so starting we are having some theoretical questions. So dispersion measures. Let's write some random questions. Dispersion measures. Dispersion क्या measure करता है? The scatterness of the set of observation. The observation कितने scattered. Second is the concentration of set of observation. Observations कितने concentrated है? तो which of the following answer will be correct? Of course, scatteredness. Scatteredness का मतलब क्या होता है? फैलाव कितना है, कितने दूर दूर है हमारे पास ऑब्जर्वेशन. तो डिस्पर्शन बेसिकली क्या मेजर करता है? स्कैटरनेस को. Then when we are comparing two or more distribution, now whenever comparison की बात आती है तो comparison के लिए बेस्ट मेजर कौन सा है? relative measure, because हमें परसेंटेज का आइडिया लग जाता है कि like what is the increment or what is the change in terms of percentage. So always for comparing, relative measure is used. Which one is easiest to compute? Absolute measure is easy to calculate. Which one is absolute measure of dispersion? इनमें से कौन सा absolute है? सारे ही absolute हैं. All of these measures. Which measure of dispersion is most useful? Guess. तो अभी तक हमने 3 measure of dispersion को पढ़ा है and fourth one हम next class में करेंगे standard deviation. So when we compare all the 4 dispersion, then we find that standard deviation is known as the best measure of dispersion. स्टैंडर्ड डिवीजन को ही सबसे बेस्ट मेजर माना जाता है. Which measure of dispersion is not affected by the presence of extreme observations? एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस का इफेक्ट किस पे नहीं पड़ता है? तो इफ वी टॉक अबाउट रेंज, तो रेंज इज डिपेंड ऑन एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन. रेंज आता ही किससे है? एक्सट्रीम वैल्यू से. दैट मीन्स हाईएस्ट वैल्यू एंड लोवेस्ट वैल्यू से. तो रेंज तो इसका आंसर नहीं होगा. देन मीन डिविएशन. मीन डिविएशन क्या है? इट इज बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशन. इसमें सारे ऑब्जर्वेशन का यूसेज होता है. तो अगेन मीन डिविएशन भी अफेक्ट होगा. Standard deviation is also based on all the observation, so this also will get affected. But quartile deviation, so as we have discussed, it is based on middle 50% of observation. तो starting के 25% and last के 25% का कोई usage नहीं है. It is mainly based on middle 50% of observation. So quartile deviation is the correct answer. 8. Which measure of dispersion is based on absolute deviation only? Absolute deviation का मतलब क्या है? जहां पर हम मॉड्यूलस का यूज करते हैं. तो कौन से फॉर्मूले में हमने मॉड्यूलस का यूज किया है? मीन डिविएशन. ऑप्शन नंबर बी. 9. Which measure is based on the central 50% of observation? मिडिल 50% पे कौन बेस्ड है? तो अभी जस्ट हमने डिस्कस किया है. इट इज क्वार्टाइल deviation. 10. Which measure of dispersion is based on all the observations? सारे observation पे कौन based है? तो standard as well as quartile. So A and B. No, we are selecting option A and B. A and B is correct. Quartile deviation is based on middle 50%. So D is correct. A and B, but not C. 11. Appropriate measure of dispersion for open end classification. तो जब क्लास इंटरवल ओपन एंडेड है तो कौन सा हमने डिस्कस किया है? क्वार्टाइल डेविएशन. सी. द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेजर ऑफ डिस्पर्शन. सबसे ज्यादा यूज आने वाला डिस्पर्शन कौन सा है? स्टैंडर्ड डेविएशन. तो उसकी सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी, सबसे बेस्ट कौन सा माना जाएगा? स्टैंडर्ड डेविएशन.
Then now यहाँ पे कुछ मिक्स क्वेश्चन है, तो जो स्टैंडर्ड डिवीजन के होंगे प्रॉपरली वी विल स्किप ऑल दो. 16, a shift of origin has no impact on. तो चेंज ऑफ ओरिजिन का किस पे इम्पैक्ट नहीं होता है? रेंज पे नहीं होता, मीन डेविएशन पे नहीं, किसी भी मेजर ऑफ डिस्पर्शन पे नहीं होता है. तो ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज. 17, the range of these series. So for calculation of range, apply the formula highest minus lowest. 20 minus 9, that is 11. Then all these are standard deviation. Now the next one. Write down the correct answers of these. What is the coefficient of range for the wages of 8 workers? Yes. Set B, question number 1. इसका आंसर अभी आपको करना है. Find out the coefficient of range. कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करें? So everybody has to answer question number 1. Which option is correct? A, B, C, or D? Coefficient of range. So highest value 90 minus lowest value 60 upon 90 plus 60 into 100. So 30 upon 150 into 100. So which option should be selected? B or D? Because 20 is written in both B as well as D. तो किसको select करें? So since we are talking about the coefficient of range, it is a unit free measure. तो rupees नहीं आना चाहिए. D option will. Okay. Then try the third one. Coefficient of range for the following data. So class interval, कौन सी है? Inclusive. Convert this into exclusive. The first value and last value दोनों को convert कर लें. So highest value 59.5, lowest value 9.5, divided by again 59.5 plus 9.5 into 100. Now check the result. So final result will be how much? 72.46. Okay. Fourth one. The range of x is 2. Range of x is 2. What would be the range of minus 3x plus 50? So we can say that y is equal to minus 3x plus 50. Now we have to calculate the range of y. So mod of b into range of x. So 3 into 2 gives 6. So range of y is equal to 6. Okay. Now, question number 5, question number 6. These are based on mean deviation about mean. तो इसकी हमने अभी बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर ली है. You can easily try this at your home. So 5, 6 you can take as your homework. 7th is also similar, but 7 फिर भी हम अभी एक बार कर लेते हैं. The coefficient of mean deviation about mean for first 9 natural numbers. First 9 natural numbers. So series is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Now, in case of natural number, mean का shortcut क्या है? N plus 1 by 2.
So 9 plus 1 by 2 gives 5. So 5 is your arithmetic mean. Now you can take the deviation mod x minus 5. So 1 minus 5 is 4, 3, 2, 1, 0. 1, 2, 3, 4. The total is 20. Now you are finding 9. And next is the coefficient mean deviation upon mean into 100. So you can cancel this and your result will be 400 upon 9. So this is the final answer. Okay. So in this way, you will get all your answers. So I think most of the things we have covered today and very less is left for the next session. So let's keep some of the questions and some concept for the next session. Okay. So your today's task is to revise all the concepts which we have done. Try to solve all these questions. Also, I have given some assignment on the application as well. Try to solve all those questions also ताकि आपका अच्छे से practice हो जाए. Okay. So we will meet again in the next session that is on Monday. So till then, bye everyone. Take care and see you soon. The class is finished.